Good evening, everyone. Am I Good audible? evening, ma'am. Okay, so just wait for a five Good minutes, then evening, we will ma'am. start. We just wait for some other participant. If they join within a 5 minutes, then we will start. Okay. Okay. So today the topic that we have to discuss is PCR. Do you know about the PCR? Any idea? Yes, ma'am. Tell me. It is used for amplification of DNA or RNA molecule Okay. in number of copies. Okay. Anything else? It involves three steps such as denaturation, Hmm. annealing, and extension. Hmm. It Right. includes primer, Taq polymerase, nucleotides, etc. for the amplification process. Yes, right. Anyone else? Um, this PCR, you just tell me that PCR is used to amplify the DNA and RNA molecules, but it is not amplify the RNA molecule. Okay. If we have to amplify it, we required a DNA molecules. Clear? Yes, ma'am. Okay. This PCR only amplify the DNA molecules. So I will share you the PPT. PCR is polymerase chain reaction, which means that PCR amplify the DNA molecules. Now, what is the amplification? Means that amplification means that preparing the copy of the DNA molecule. Preparing the copy of the DNA molecules. Now, what we have to do if we have a one copy of the DNA. Now, this one copy of the DNA can convert it into the millions or billions copy of the DNA with the help of three steps. Clear my points? Yes, ma'am. We required DNA strand for the amplification. We require DNA strand for the amplification. Now, we all know that this DNA is what? DNA is a double helix structure, right?
DNA is what? It is a Ma'am, I cannot see the screen. double helix structure. And this double helix structure first denatured and converted into the single strand. Okay. Then it amplified, right? That's why this double standard helix structure is required for the polymerase chain reaction. Clear? And all the three steps are what? They are the temperature dependent. Now, this PCR is invented in 1983 by Gary Mullis, and he got Nobel Prize for the PCR in 1993. PCR is simply means that the amplification of the DNA molecule in vitro means that we amplify this DNA, we increase the number of DNA in a lab, and it is widely used in case of the diagnostic, research and industry. This is your PCR. Now PCR is important because very quickly they amplify the DNA. Like rapid amplification of the DNA take place. Rapid amplification of the DNA take place, and it is essential for the genetic studies, disease detection, forensic analysis and food safety. Principle of the DNA, it work on the principle like mimics of the natural DNA replication. These are the heat stable and required at Taq polymerase, and it completed into a three-step. The first is your denaturation, in which the double standard of the DNA converted into the single strand. Then annealing occur, which means that we introduce a primer on one side of the this DNA molecule, either be uh, 3' to 5' or 5' to 3'. That's how we introduce the strand. Then this primer extended and make a copy of the DNA, which means that if we have a one DNA molecules, then it converted into the two, and that's how it increased the number of the copies. Now, component of the DNA template required a target sequence, means that the sequence which we have to amplify, because we all know that this DNA molecules are very long. So we take that sequence which we have to amplify. Then we required a complementary DNA fragments. This complementary DNA fragments are what? They are short and they are known as a primers. First, we required a DNA template in which we have to amplify the DNA molecules. This is known as a target sequence. Suppose that this is our whole DNA molecule. Now what we have to do, we take a target for the amplification. Suppose that we set a target from there to there. Now this sequence can be amplified in each step. So this is known as a target sequence. Shamini, please mute yourself. This is known as a target sequence, and then we required a primer. The primer is known as a
short length complementary DNA. Complementary DNA means that if the strand is 5 prime to 3 prime, then its complementary will be 3 prime to 5 prime. Clear my points? Yes, ma'am. Next is your component of the PCR. We also required a DNA polymerase, which is known as a Taq polymerase. It is heat stable DNTP. It is a building block ATGC, adenine, thymine, guanine, and cytosine. Buffer is required, magnesium ion is required, pH should be properly maintained, and enzyme activity should be noted. Now, PCR reaction. If a PCR reaction contain a DNA template, primer, sequences, that is your DNA bases, Taq polymerase, and buffer. Then the first step is your denaturation, that I already told you that the step are depend upon the temperature. So this denaturation means that the double standard of the DNA converted into single strand of the DNA. This is known as a denaturation, and it occurs at 95 degrees Celsius. Okay. Here the double stranded DNA is separated into the single stranded DNA. Like suppose that this is your double stranded DNA. Now when denaturation occur at 95 degrees Celsius, denaturation it converted into the single strand. Next step is your annealing. Annealing is a temperature again this annealing is a temperature dependent, and it required around 50 to 65 degrees Celsius. In annealing step, we added the primers. These primers are short and it is added into the target sequence. It is added into the target sequence. Then extension is occur at the 72 degrees Celsius. In this step, the Taq polymerase are synthesized and it form a new strand of the DNA. Means that the annealing that we add, suppose that this is your single stranded DNA. Now here annealing are added. This is your annealing. Now in extension, this annealing are extend, like, and form a single double stranded DNA. Like suppose that this is your 5 prime to 3 prime. This is your 3 prime to 5 prime. Now this primer which we introduce in this annealing step are extended. Now this is how this make a copy. Clear my points? Step of the this PCR is clear.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. PCR cycle, single cycle is denaturation, annealing, and extension. And if we perform 30 cycles, then the 1 billion of DNA copies will be produced. Thermocycler is what? It is a automated machine which control the temperature changes. Okay. And heat the block lid programmable setting. Type of the PCR. So the first is your conventional PCR. Conventional PCR is endpoint detection and it detects the quality of the DNA. Real-time PCR, it monitors the amplification in real time with the help of the fluorescent dye. And it is quantitative analysis, means that how much amount of that DNA is present. It simply amplify it. Then RT-PCR, RT-PCR is reverse transcriptase PCR. Means first this DNA is converted into the RNA, then this RNA is amplified. It is used in the RNA viruses, for example, COVID-19 detection. When COVID occur, we hear about it, RT-PCR test. Okay. So this RT-PCR test is based on this. Then multiplex PCR, which is this multiplex PCR uses the multiple primer. In a single reaction, it use the multiple primers, and due to that multiple primers, multiple targets are amplified. Nested PCR, it is a two set of the primers and two reactions occur. It increases the specificity. Digital PCR, it divided into the 1,000 of the micro reaction, accurate DNA quantification. Now, application in medical diagnostic, it detect the genetic disorders, identification of the infectious agent, that is your TB, HIV, HPV, COVID-19, and personalized medicines. In forensic science, it is used in a DNA fingerprinting, paternity testing, identification of the criminals or disaster victims. And in food industry, it is applicable in the detection of the pathogen microorganism, that is your Salmonella, E. coli, and Listeria. And it is also used in the identification of the GMO. GMO means that genetic modified organisms. Authentication of the meat and processed food. In research, it is applicable in gene cloning, DNA sequencing, evolutionary and ecological studies. Advantages of the PCR. It high sensitivity, fast and reliable, require small samples because a small sample can copy a billions of that DNA molecules. Limitation, risk contamination, like if we get the false result. And it also required a prior knowledge of that DNA sequences and expensive equipment for the advanced type. So this is all about the PCR. Do you understand about the PCR? Any query? Just a minute, I will show you the video related to this. Just a minute.
Just 1 minute, and I will show you that practical video, okay? Just let me know the voice is audible or the screen is visible. Please tell me both. When I think about how I divide my time, it's very carefully. I'm Alex Diaz. I'm a professional marketer in Seattle. Hello everyone. Today we are going to cover PCR. What is PCR basically? PCR is polymerase. Ma'am, Voice voice is not audible. is not audible. Okay, just give me 1 minute. Once you see that video, then after that we will just discuss the basic of all the instruments. Okay, like your most of the instrument we are already discussed. Like we already discussed about the PCR, autoclave, hot air oven, water bath, and your this laminar airflow. Okay, but we will discuss in basic about it. Okay, but first you see that video, then after that we will discuss about that. After the class, please upload the profile pictures in your account. Okay, if you are not uploading the profile picture, you will not get the certificate. And I guess test will be on tomorrow. Okay, so you have to give a test, and this tests are totally based upon your training programs. Okay, it is based on the MCQ. There is 50 questions. Okay, minus marking are also there, so you have to take care when you are doing that MCQs. Anybody have any query? Take time. At that time, please ask your query. Ma'am, I wasn't able to attend tomorrow class. So what you had taught tomorrow? Yesterday class. Okay. Yesterday, sorry, yes, ma'am. Okay, no issue. I will upload the live session of yesterday. Okay. Then you can see that. Okay, ma'am, please. Okay. Okay, ma'am. Yesterday we will discuss about that isolation of the DNA from the bacterial cell, hair and saliva. Human hair and human saliva. Okay. I will Okay, upload live session. okay. Thank you. Anybody? Anything else? Like अभी तक किसी को कोई भी डाउट है कोई भी आइसोलेशन टेक्निक में या पीसीआर या ग्रोथ किसी भी चीज में Ma'am, which type of PCR is most commonly used for laboratory work?
In laboratory, we will use just a minute. I will tell you. Actually, I just forget to attach the image with this. We use the conventional PCR. Do you see the PCR machine? Anybody? No, ma'am. Okay, first you see that video, then after that I will show you the PCR machine also. Okay. Hello everyone. Today we are going to cover PCR. What is Now it is audible. Yes, ma'am. PCR basically? Basically, it is theory based, but your concept will be much clear with this video. Okay. PCR is polymerase chain reaction. अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है पीसीआर का यूज क्यों करते हैं और कहाँ पीसीआर का मतलब कैसे पीसीआर परफॉर्म किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है। अच्छा, उससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि पीसीआर को डिस्कवर कैरी मिलिस ने किया था। He was one of the biologists who discovered PCR Carey Mullis. Basically जो PCR का फंक्शन होता है as per the Carey Mullis, उन्होंने कहा था कि DNA के एम्प्लीफिकेशन के लिए हम PCR यूज करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि मेरे पास एक सिंगल डीएनए की कॉपी थी, एक सिंगल डीएनए था मेरे पास, लेकिन मुझे इसे आगे फर्दर यूज करना था और फर्दर यूज करने में एक रिस्क था कि एक डीएनए अगर इनकेस आगे के प्रोसीजर में खराब हो गया या कुछ हो गया तो फिर हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने एक सोल्यूशन बताया था कि इस डीएनए की कॉपी, इस डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लीफाई कर सकते हैं, और एम्प्लीफाई करके हम क्या बना सकते हैं, इसकी बिलियंस ऑफ कॉपीज तैयार कर सकते हैं। मतलब from a single DNA what we can do, we can make up or we can say amplify the billions of copies of DNA. so amplification का मतलब होता है किसी भी चीज के नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देना, that we called DNA amplification. तो ये इसका मेन फंक्शन होता है, DNA amplification में हम इसे यूज करते हैं। from a single DNA we make a billions of copy by repeating the PCR number of times. ऐसा नहीं है कि हमने एक पीसीआर की साइकिल चलाई, एक डीएनए डाला और उससे हमें बिलियंस ऑफ कॉपीज मिल गए, नहीं। एक डीएनए को उसमें हम पीसीआर को नंबर ऑफ टाइम्स हमें रिपीट करना होगा, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने के बाद उससे हमें बिलियंस ऑफ कॉपीज मिल जाएंगी। और बेसिकली जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए वो होता है 2 to the power n, और ये n क्या होता है, दिस n इज नंबर ऑफ टाइम्स कि हमने पीसीआर को कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने उस साइकिल को चलाया है, ठीक है। और आजकल अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आज के टाइम में हम इसे यूज कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस में। PCR most commonly used in forensic science. Forensic science के अलावा it is used in medical laboratory, biomedical research, इन सारी चीजों में। So this is all about a basic introduction of PCR, that it is a polymerase chain reaction, Carey Mullis ने बताया। और फंक्शन क्या होता है, तो basically the function of PCR is DNA amplification. Amplification का मतलब क्या होता है, from a single copy we can make billions of copies by repeating the PCR cycle. The formula which we use is 2 to the power n. Now बात करते हैं PCR के steps की, कि पीसीआर एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है या मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होता है, किस तरीके से पीसीआर हम परफॉर्म करते हैं, तो वो थोड़ा देखते हैं पीसीआर का। बेसिकली पीसीआर को कहा गया है कि इट इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में पीसीआर कंप्लीट किया जाता है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, सेकेंड स्टेप इज एनिलिंग, and the third step is extension. पीसीआर की जो साइकिल चलती है वो इन 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। अब क्वेश्चन होता है डीनेचुरेशन क्या होता है, एनिलिंग क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है। इसे पढ़ने से पहले एक चीज हमें पढ़ना है, वो है कि इस पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत होती है।
and that enzyme is called Taq polymerase. What we called it? Taq polymerase. और Taq polymerase हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? तो हम इसे ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अ बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस. इस बैक्टीरिया से इस टेक पॉलीमरेज को ऑब्टेन करते हैं. अब क्वेश्चन उठता है कि यही वाला बैक्टीरिया क्यों यूज किया जा रहा है, या यही वाला एंजाइम क्यों यूज किया जा रहा है? कोई और एंजाइम भी तो यूज किया जा सकता था. तो एंजाइम जब हम पढ़ते हैं तो एंजाइम की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं दैट दे कैन वर्क एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक पीएच. ये एक फंक्शन माना ये एक ऑप्टिमम कंडीशन मानी जाती है कि एंजाइम जब भी वर्क करता है तो वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे काम करता है. अगर वो टेम्परेचर और पीएच हम उसे प्रोवाइड करेंगे तो ही वो एंजाइम एक्टिवली काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे. जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी का जो एक जनरल टेम्परेचर माना जाता है दैट इज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसा कहा जाता है कि हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं दे ऑल वर्क एट 37 डिग्री सेल्सियस. तो हमारे एंजाइम्स कितने टेम्परेचर पे एक्टिव है? 37 पे. उसी तरीके से वो एक उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया कि उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसी पे वो काम करेंगे. अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए तो एंजाइम डिग्रेड कर जाता है, और अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम हो जाए तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है. तो टैक पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है. इट कैन रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर. और जब हम पीसीआर के स्टेप्स पढ़ेंगे तो इन स्टेप्स में हम देखेंगे कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो एंजाइम हाई टेम्परेचर पे भी डिग्रेड ना हो और स्टेबली काम कर सके. तो वो ये एंजाइम है टैक पॉलीमरेज, जिसे हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अ बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस. So basically now we are going to talk about the steps of PCR. Remember, PCR is completed in 3 steps. The very first is denaturation, second is annealing, and third is extension. So these are the 3 steps in which PCR completed. The very first is denaturation, second is annealing, and third is extension. So first of all, we discuss about denaturation. What is denaturation? Okay, as the word signify that it is going to denature something or break down something. So denaturation में होता क्या है? We are having a double-stranded DNA which is having a polarity 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime. As we already know कि DNA जो होता है वो complementary होता है एक दूसरे के स्ट्रैंड का. तो denaturation में क्या होगा कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA, दिस इज DNA इज कॉल्ड डबल स्ट्रैंडेड DNA. ये डबल स्ट्रैंडेड DNA ब्रेक हो जाएगा हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर. This double stranded DNA break into single stranded DNA. So this is what single stranded DNA we are having. The polarity remains same. So this step is basically called denaturation, and the temperature which is required for the denaturation is 95 to 98 degrees centigrade. This is the temperature which is required for the denaturation. Before denaturation से आगे बढ़े annealing पे जाएं क्या और extension पे जाएं, एक चीज़ समझ लेते हैं हम लोग कि कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है PCR परफॉर्म करने के लिए. जैसे हमारा टेम्पलेट हुआ और एंजाइम हुआ और क्या कहते हैं उसके अलावा प्राइमर्स हुए, क्योंकि एनेलिंग वाले स्टेप में हम प्राइमर के बारे में पढ़ते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी प्राइमर्स. प्राइमर्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइमर्स होते क्या है. अब जैसे डबल स्ट्रैंडेड DNA हमारा DNA है, as we already having a DNA, इसमें इस तरीके से स्ट्रैंड होते हैं हमारे DNA के अंदर.
एंड दिस स्ट्रक्चर वी कॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये पूरा का पूरा डीएनए, क्योंकि पीसीआर जब हमने शुरू किया था तो मैंने एक चीज बताई थी कि पीसीआर एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है। अब ये पूरा का पूरा डीएनए थोड़ी ना एम्प्लीफाई करना है, कोई पार्ट हमें आगे लेके चलना है डीएनए का जिसे हमें एम्प्लीफाई करना है। तो इसे क्या कहते हैं हम, सबसे पहले इसे कहते हैं टेम्पलेट। ये सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए कि हमें टेम्पलेट, इस पूरे डीएनए में से सपोज मुझे ये वाला पार्ट एम्प्लीफाई करना है तो मुझे ये पार्ट चाहिएगा, दैट इज बिकम अ टेम्पलेट। उसके बाद एंजाइम के बारे में हमने बात किया था, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। सी ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज होगा इसमें हमें कुछ स्पेशल तरीके का डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे भी परफेक्टली काम कर सके, क्योंकि पीसीआर ना एक कंप्लीट टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोसेस है जिसके अंदर हर एक स्टेप पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अभी हमने जैसे डीनेचुरेशन में देखा कि हमें 95 टू 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, एनेलिंग में हम देखेंगे कि 50 टू 65 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर चाहिए, एक्सटेंशन में जाएंगे तो हम देखेंगे कि 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो हर एक स्टेप पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हमें एक स्पेशल तरीके का डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे काफी इफेक्टिवली काम कर सके। और ये जो स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज होगा इसे कहेंगे हम टैग पॉलीमरेज, जो हमने पहले भी देखा था। अभी इसे क्या कहेंगे, टैग पॉलीमरेज, जिसे हम किससे ऑब्टेन करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस, एक बैक्टीरिया होता है उससे हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हमें इसी को पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए कुछ न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ये न्यूक्लियोटाइड्स किस लिए चाहिए, देखो डबल यहाँ से हम निकालेंगे, एक हम यहाँ से अपना टेम्पलेट निकाल लेंगे, उसे फर्दर हमें डीएनए बनाना है, तो डीएनए बनाने के लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। उसके बाद हमें जो चीज चाहिए दैट इज प्राइमर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमर होते क्या हैं, प्राइमर होते हैं बेसिकली एक पीस, हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड का, पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और या हम कह दें दूसरा जो हमें प्राइमर को कह सकते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं, कि जिस भी डीएनए की सीक्वेंस का होगा कॉम्प्लीमेंट्री पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। लाइक जैसे ये वाला अगर हम इस डीएनए को ओपन करके देखें, ये इस तरीके से आ गया, इसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यहाँ पे इस तरीके से है। अब हमें यहाँ पे प्राइमर ऐड करना है, तो प्राइमर ऐड जब हम करेंगे तो ये प्राइमर हमने ऐड कर दिया, इसकी पोलैरिटी की क्या होगी, ऑपोजिट होगी, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम आ जाएगा। सो इसे कहते हैं प्राइमर। इट इज अ बेसिकली पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड और द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जहां पे भी ऐड करना है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और ये फर्दर आगे जाके हमारा क्या बनाने वाला है, पूरा प्रॉपर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने वाला है। तो ये बेसिक चीजें थी जो हमें पीसीआर परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती हैं। अभी हमने डीनेचुरेशन वाला स्टेप देख लिया था कि डीनेचुरेशन में क्या करते हैं, जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसे ब्रेक करके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनेलिंग। एनेलिंग में करना क्या है, सेकेंड इज एनेलिंग। एनेलिंग में हमें करना क्या है कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेपरेट होकर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हुआ है, ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया, इस पे हमें प्राइमर्स ऐड कराने हैं। क्या इस पे एनेलिंग वाले स्टेप में हमें करना क्या है, हमें प्राइमर्स ऐड कराने हैं। और ये प्राइमर हम वहीं ऐड करवाएंगे जिस पार्ट को हमें आगे लेके चलना है, आगे एम्पलीफाई कराना है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इसे ऐड करा दिया, इस वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो प्राइमर की पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, प्राइमर की पोलैरिटी क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये हमने क्या करा दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइमर्स करा दिया इन द सेकंड स्टेप व्हिच इज कॉल्ड एनेलिंग। एंड द टेंपरेचर अगेन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड इज 50 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर हमें एनेलिंग परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है। दिस इज द सेकंड स्टेप। नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ पीसीआर इज एक्सटेंशन। नाम ही बता रहे एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बढ़ जाना, समथिंग विच इज एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंशन वाले स्टेप में क्या होगा, जो हमारा थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन, उस एक्सटेंशन वाले स्टेप में क्या होगा कि जो प्राइमर्स हमने ऐड कराए थे
हमने इस डीएनए के यहाँ पे फ्रेगमेंट ऐड करवाया था जिसे हमने प्राइमर क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. बोला था, ये प्राइमर ऐड कराया था। ये क्या करेगा, पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, और पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री नीचे की तरफ भी हमने ऐड किया था, दूसरे स्ट्रैंड में भी हमने ऐड किया था। सपोज यहाँ पे हमने वो प्राइमर ऐड किया था, तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म कर लेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म होते ही हमें क्या मिल जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वापस से मिल गया। Okay, so this is all about that PCR. Okay, any query? Any query? Ma'am, you told that you will show the picture of PCR. I will search on that Google, then I will show you. Okay. First of all, just okay. First, I will show you the photo. Then after that, we will continue. Okay. See, we every laboratory have the different type of that PCR. Okay. So these all the PCR machine. We have this type of PCR machine in our laboratory. What we have to do, we have a PCR tubes, and in PCR tube we add template, primer, buffer, tag polymerase, and just put into that machine. Now this machine can do all three steps without any involvement. Clear? Yes, ma'am. Maybe the Wi-Fi that is चालते कितना फोन काटतो हाँ चालते ना डेटावर हाँ डेटावर चालते ना Please mute yourself. Okay. Now the next is your bioinstrumentation. Some instrumentation that instrument that we are already discussed, but some are left, so we have to discuss it. Okay. Like autoclave, we are already discussed about it. Autoclave is used for the sterilization purpose. It is used for the sterilization purpose. Temperature is around 121 degrees Celsius, 15 psi pressure, and time is required 20 minutes. Okay. And sterilization means that it kills the all type of microorganisms. Here we use a pressure and we use a steam for the sterilization purpose, which means that we use a wet heat for the sterilization, and we can sterile anything like glassware, in surgical instruments, cloth, plastic, anything. This is about the autoclave. Next is your hot air oven. This hot air oven is also used for the sterilization. It is sterile at 151 degrees Celsius temperature and for 30 minutes. There is no pressure is used for the sterilization purpose. That's why it is known as a dry sterilization technique. And it can be sterile only glassware. Next is your water bath. Water bath is used for the incubation
steam, and for heating purpose. And hot air oven, in hot air oven, we can also do one thing, that is analysis of moisture content in food product or pharma product at 132 degrees Celsius. Then fourth is your incubator. Incubator provide the atmosphere for the growth of the microorganism. For bacteria, it provided 37 degrees Celsius for their growth, and for fungus, 24 to 28 degrees Celsius temperature is required. Fifth is your Muffle furnace. Muffle furnace is used to determine the ash content in food and pharma product. High temperature is used. Around 600 degrees Celsius is used. Then sixth is your Soxhlet apparatus. It is used to detect the fat content in a food product. Determine the fat content in a food products. Then centrifuge, which is used for the separation purpose. Weighing balance, analytical weighing balance. Weigh the sample and does not allow the air to interfere the result. Weigh the sample chemical material does not allow the air to interfere into the result. Clear my points? Yes, ma'am. Then UV visible spectrophotometer. It is used for the it is used for the it is used to measure the
concentration of the carbohydrates, proteins, and other macromolecules into the food product. pH meter, we are already discussed about it. pH meter, we are already discussed. PCR, we are already discussed. Laminar airflow, we are already discussed in detail. Colorimeter. Colorimeter is used for the measurement of the color. It is used for the measurement of the color. Okay. We are already discussed about the SDS page. Sorry, not SDS page. SDS page is used for the separation of the protein molecule. Separation of the protein molecules. Agarose gel electrophoresis, we are already discussed about it. Vortex, it is used to mix the small quantity rotatory shaker for mixing purpose. Okay. Microscope, for the visualization of microorganism. Clear? Magnetic stirrer, mixing. Anything else? Any instrument that I don't tell you? Anybody? Any theory? If you have any query, just let me know. In detail, the videos are already uploaded in your account. Okay, you can see that video with the pictures of the instrument. Then it will be very easy for you, okay? Ma'am, I have a query regarding tomorrow's test. Your voice is not clear. Can you please repeat it? Ma'am, I have a query regarding test. Yes, please ask. Ma'am, what will be the timings? You can do at any time, okay? When the test Okay, is on, tomorrow will be test is on. So you can do it within a 24 hours. Anything else? Ma'am, number of questions? 50. 50. Okay. Ma'am, please upload that video. Yeah. Oh, please I will upload upload videos. I upload Thank it. you, ma'am. Ma'am, upload all the videos fast. Yesterday's All the and videos. today's also. All Yesterday's the and videos today's are already also. uploaded. Not, ma'am. I cannot see it on the portal. Which video?
Yesterday You also. are talking about the live session or the practical part? Live session. Live session, I guess it is uploaded. Only few are left. Okay, I will see that. Okay. Please, ma'am. Okay. Anything else? Madam, how can I upload the profile photo? Okay, for uploading your profile photo, you have to visit our website. Then you have to click that option in which it is written that see. Here you can see that login Yes, option, ma'am. right? Then enter your registration number with your password and login. When you log in yourself, there is an option of here the option are visible. Okay, in which you see that the upload edit of the profile. When you click on the that option, then that option will be appear in which you have to upload your profile picture. Even the video related to it is already uploaded in our account. You can see that video also. Madam, in my login, there is no option is available for. No option. Yes, ma'am. You are I'm, from? You are from? I'm from Maharashtra, No, Nandurbar no, but district. the option is there. See, I'm going to log in. See that? I will select the student, then enter the registration number, the number which the phone number which you use for the registration, then password, login. I think just a minute. Here you can see that the profile edit option, right? Yes, ma'am. When you click that option, scroll down, profile pic, choose that option. Simple. Now you got it. Okay, ma'am. Which option you are saying that it is not visible? That profile option is not available. I check it several times, madam, but You are logging with the phone or the laptop. phone. When you are logging with the phone, like on the left side, three horizontal lines are there. When you click on Oh, that horizontal line, then this option will be appear. okay, ma'am. Thank you. Anything else? Anybody? Ma'am, I have already done one course from the ITLS. Hmm? The thing is that right now, when I am trying to log in, it is Hmm? not happening actually, No. and You I missed could your not. password. I think. So I pay the fees. I contact to your Hmm. all of you also. You can So mail your registration number and your name, okay, and this just write down. registration number, No, no, the number which you use for the registration. Okay, that number, and along with mobile number. mobile number. Along with that number, send your name and write down Okay. that I forget the password. Okay, I will message you on the WhatsApp. Basically, Hi. I trying a several way, and that is Mhm. the thing that I could not able to log in. Also, I could not able to No, see no, you anything. can Also, WhatsApp us and even you can mail. okay, fine, fine. Because that time they said you Mhm. just pay the fees. We will upload. We will update your profile, and you will able to see all the things. But since last 3 days, it Mhm. doesn't happen anything. So if you please could do in earliest manner, so I can able to see the uploaded video as well. Because my Just, profile is ready before only, mhm. because I have done a lots of courses from Just your you drop, platform. you just drop the message, you will get the password. Okay. Fine, fine. Thank you, ma'am. Okay. Anything else? Anybody? Okay, then thank you so much. Best of luck for your future, for your test. And in future, if you have any query, you can ask us on that helpline number. Okay.
Thank you, ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Bye bye. Thank you. Bye, ma'am.